Hello my dear kids, welcome back to Technology series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Maths of class 5. Children, this is your book, Joyfull Mathematics, and today we are going to do chapter number 14 of your book. And the name of the chapter is Profit and Loss. So here you can see there are some pictures in front of you. Look at the pictures of these old articles. ये पुरानी चीजें हैं, इनकी pictures आपको दिखाई दे रहे हैं. Suppose you sell all of these articles at a flat price of 200. Means ये जितनी भी चीजें हैं आप उसको जो है सेल में लगा रहे हो और आपको 200 rupees इसका प्राइस है. What is the profit or loss on each article? हर आर्टिकल पे आपको क्या प्रॉफिट है या फिर क्या लॉस है. This you have to find. So here you have to name the article, then CP, which is cost price, and selling price, how much profit or loss you get, and what is the percentage. So this you will be able to find out when you will complete this chapter. In our day-to-day life, we buy articles from the shopkeeper in the market. हम daily क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें खरीदते हैं मार्केट से, which they buy for the manufacturers and the wholesaler. अब वो क्या करते हैं मार्केट में जो रिटेलर्स हैं वो हमें मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं हमारे लिए. In order to earn money, the shopkeeper sell the article to customer at a higher price. अब उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कस्टमर्स को वो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के और फिर प्रोडक्ट बेचते हैं. That is which he bought them. जिस प्राइस में उसने खरीदा उससे ज्यादा अमाउंट पे वो बेचते हैं. What is the cost price and selling price? Cost price और selling price क्या होता है? The price at which the article is purchased. वो प्राइस जिस पे आर्टिकल को हमने खरीदा वो हमारा cost price हो जाता है. The price at which the article is sold. जिस प्राइस पे हमने उस आर्टिकल को बेचा है, उस सामान को बेचा है, वो है हमारा selling price. Next is profit या फिर loss. To make the profit, the selling price must be higher than the cost. तो अगर हमें चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से. मींस मैंने ये पेन खरीदा 5 रुपीज का और उसे मैंने 7 रुपीज में सेल किया तो इसका मतलब मेरी सेलिंग प्राइस ज्यादा है. तो 7 रुपीज में बेचा है और 5 रुपए में खरीदा तो इसका मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ. When the shopkeeper sells an item for less than its cost. अब 5 रुपीज का पेन था, मैंने 4 का बेच दिया, इसका मतलब कॉस्ट तो 5 रुपए था बट सेलिंग प्राइस क्या हो गया 4 रुपीज. इसका मतलब मुझे 1 रुपीज का लॉस हुआ. फाइंडिंग प्रोडक्ट और प्रॉफिट और लॉस. अब प्रॉफिट और लॉस कैसे ढूंढते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द गिवन एग्जांपल्स. द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज दिस मच. एक 1 पेयर शूज हमने खरीदे 2 रुपीज की एंड सेलिंग प्राइस इज दिस मच. मैंने इतने रुपए की उसे बेच दी. फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस. कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. सो अब आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस जो ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ. सो एस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. द प्रॉफिट रिजल्ट इज एसपी माइनस सीपी विच इज 30 रुपीज. तो मुझे 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज दिस मच. एक टेबल है इतने रुपीज की और उसे हमने इतने रुपीज में बेच दिया. अब आप देख सकते हो खरीदा तो 2000 का लेकिन बेचा कितने में 1750 रुपीज में. तो इसका मतलब हमने कम ही बेचा है. सो द प्रॉफिट एंड लॉस इज, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, सो यहाँ पे लॉस हो गया. सो सीपी माइनस एसपी इज 2000 माइनस 1750, सो इट विल बी 250 रुपीज. तो यहाँ पे मुझे 250 रुपीज का लॉस हो गया है. सो नाउ चिल्ड्रन लेट्स डू दिस एक्सरसाइज 14.1. First question is find the profit or loss. Profit हुआ या loss. So here the selling price is 750 rupees. Cost price is 600. So 750 SP minus CP. क्योंकि यहाँ selling price ज़्यादा है. So 600 will be, so the amount is 150 rupees. Means here is the profit of 150 rupees. Next, let's do this question. Question number F. Here the cost price is 800 rupees and the selling price is
700 रुपीज। तो अब कॉस्ट प्राइस यहाँ ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला है CP माइनस SP। सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 816.75 रुपीज माइनस 705.85. So let's subtract this. So here children, the loss that occurred is rupees 110.90. So यहाँ पे जो लॉस हुआ है 110 rupees and 90 पैसे का हुआ है. So similarly, you have to do the next questions. Now let's move on to question number 2. Sahil purchased a laptop of this much rupees. Sahil ने इतने रुपीस का लैपटॉप खरीदा. He spent this much for repairing. इतने पैसे उसने रिपेयरिंग में खर्च कर दिए. If he sold the laptop for 30,500, अगर उसने उस लैपटॉप को इतने रुपए का बेच दिया हुआ, find his loss or gain. So उसके लॉस और गेन को हम फाइंड आउट करेंगे. So let's calculate these two. पहले उसका हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं. तो कॉस्ट प्राइस के लिए 30,257 में हम प्लस कर देंगे 425 रुपीज. सो हियर द आंसर विल बी, सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस. अब सेलिंग प्राइस है 30,500. सो विच वन इज ग्रेटर? Cost price is greater. So cost price is greater than selling price. इसका मतलब यहाँ पे है loss. So यहाँ पे जो loss है, let's calculate it. So यहाँ पे जो loss है, loss of rupees 182. So इतने रुपीस का loss हो गया साहिल को. Similarly, the next question is the shopkeeper bought 20 dozen bananas for 750 rupees. He sold the bananas at the rate of 35 per dozen. Find the loss or gain. So यहाँ पे एक शॉपकीपर है, उसने 20 डजन बनानास खरीदे थे, टोटल मिला के इतने रुपए के लिए. अब उसने एक डजन 35 रुपीज का बेचा था. तो पहले हम क्या करेंगे, 1 डजन का कॉस्ट यहाँ पे निकालेंगे. सो 20 डजन के इतने रुपीज हैं, तो 1 डजन का निकालने के लिए हम इस अमाउंट को 20 से डिवाइड कर देंगे. सो वी विल गेट 1 डजन कॉस्ट. सो इट इज 37.5. सो 1 डजन इज रुपीज 37.5 रुपीज. तो इतने का उसने जो है एक डजन जो है क्या किया था, खरीदा था. सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस. अब उसने 35 रुपीज पर डजन बेचा, तो उसे क्या हो गया, लॉस. सो हमें जो है लॉस फाइंड आउट करना है, कितने रुपीज का उसे लॉस हो. तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 डजन्स. तो हम कॉस्ट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू 30 रुपीज. देन वी कैन सब्ट्रैक्ट बोथ एंड और वी कैन डू दिस, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और जो अमाउंट आएगा उसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. वी विल गेट द टोटल अमाउंट दैट वाज हिज लॉस. सिमिलरली चिल्ड्रन, यू हैव टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर गिवन हियर. नाउ फाइंडिंग CP एंड SP. अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी नो दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. सो टू फाइंड CP we use this formula. CP is equal to SP minus profit. Similarly, to find out SP, we interchange the places. So profit जो है इधर आ जाएगा and SP will be CP plus profit. We know that loss is equal to CP minus SP. तो इस फॉर्मूले को ही हमने मोल्ड कर दिया है, LHS RHS को चेंज कर दिया है. फॉर फाइंडिंग द CP हम क्या करेंगे, SP को इधर ले जाएंगे. सो बन जाएगा SP बन जाएगा माइनस से बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. सिमिलरली हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस को जो है हम यहाँ कर देंगे, लॉस आ जाएगा हमारा इधर. तो क्या बन जाएगा, CP माइनस लॉस.
So this will be the selling price. Now let's learn this with an example. Jitendra purchased a mobile phone for 6,500. So 6,500 का उसने मोबाइल फोन खरीदा. He sold it at a profit of 400. उसने 400 के प्रॉफिट पे उसे बेचा. Find the selling price of the mobile phone. हमें जो है उस मोबाइल फोन का सेलिंग प्राइस पता करना है. So what we have to do here? First, write down the cost price of the mobile is 6,500. अब प्रॉफिट क्या था? 400 rupees का. Now, for finding the selling price, what we have to do? Selling price is equal to cost price plus profit. So here the cost price was 6,500 plus 400, which was a profit. So here the selling price is 6,900. Now example number 2 says a shopkeeper sold an almirah for 7,500 at the loss of 500. एक शॉपकीपर ने क्या किया? अलमीरा को बेचा था इतनी रुपीज में और उसे क्या हो गया? 500 का लॉस हो गया. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द अलमीरा. अलमीरा टोटल कितने की थी वो हमें देनी है. सो हियर द सेलिंग प्राइस इज गिवन, लॉस इज गिवन. नाउ द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट प्राइस इज selling price plus loss. So we have added these two numbers, the selling price and the loss, and we get 8,000 as the answer. So here the cost price of that almirah was 8,000 rupees. So now children, let's move on to exercise number 14.2. So here children, the first question is we have to find the selling price. So selling price we have to find, and here cost price and profit is given. So selling price is equal to cost price plus profit. So here 675 plus 12.50. When we add these two numbers, we get 687 rupees is the selling price. 687.50. This is the selling price of this. Now let's move on to question number 2. Find the cost price. यहाँ पे हमें cost price निकालना है. So here the selling price is given and the loss is given. We have to find the cost price. So here the formula of this is cost price is equal to selling price. The formula of loss is cost price minus selling price. We have to find the cost price. So here the formula will be selling price plus loss. Now the selling price is 1475 plus 350 rupees. So now let's add these numbers. So here the cost price was rupees 1825. Similarly, you have to do the rest of the questions that are given. Now the next question is, so a shopkeeper bought a wristwatch for this much rupees. Shopkeeper का ये cost price यहाँ पे दिया हुआ है watch का. He sold it at profit of this much rupees. Find the selling price. So in this what we have to do children? We have to find the selling price. तो यहाँ पे हम cost price और इस profit को हम add कर देंगे क्योंकि यहाँ profit है, so it will be added. So we will get the selling price. Similarly, next question is Sajay purchased a mobile of this much rupees. He sold it at a loss of this much. Find the selling price. Similarly, you have to do here. Here there's a loss of this much rupees. So here the formula is loss is equal to CP minus SP. So here cost price is given, and we know the loss. So SP will be CP minus loss. So CP is 12250 minus 200. So this is the selling price of the mobile phone. So similarly children, you have to do
the rest of the questions that are given here. Now let's learn profit or loss percentage. Profit or loss are often calculated in terms of percentage. ये जो profit और loss है इसे हम percentage की term में calculate करते हैं. This helps the shopkeeper compare one sale with another. ये क्या करता है? Help करता है shopkeeper को एक sale को दूसरे से compare करने में. And also find out the overall profit or loss. और ये हमें overall profit or loss को भी calculate करने में help करता है. So here the profit percentage is profit upon CP multiplied by 100. Similarly, loss percentage is loss upon cost price multiplied by 100. Here, let's see this example number 1. A table is bought for 400 rupees and sold for 600 rupees. एक table जो है 400 rupees का खरीदा गया है. This is the cost price and it was sold for 600 rupees. Means this is the selling price. Find the profit percentage. So first let's calculate the profit that we get. So profit is SP minus CP which is 200 rupees. अब 200 rupees का हमें profit हुआ है. इसका मतलब अब हमें find out करना है कितने % का profit हुआ है. So for that 200 rupees profit upon CP into 100 we have to use this formula. So profit was 200 rupees upon CP was 400 multiplied by 100. So here the answer is 50%. तो 50% का हमें profit हुआ है. Now the next example is the cost of a computer is this much. एक computer है इसका cost है 22,000 and is sold for 20,000. Now उसे जो है हमने 20,000 के लिए sold कर दिया. Find the loss percentage. हमें loss percentage find out करना है. So here the cost price is given, selling price is given. Let's calculate the loss. So the loss is 2,000 rupees. Now we have to calculate the loss percentage. इसके लिए हम क्या करेंगे? Loss upon CP multiplied by 100. So here the loss is 2,000 multiplied by 100 and the CP is 22,000. When we solve this, we get 100 upon 11 and we have converted this into the mixed fraction. So it's 9/1 by 11%. Now let's do this exercise 14.3. Here the first question says find the profit or loss percent. Profit या फिर loss percent find out करना है. So here the cost price is 800 and selling price is 500. So cost price is more, selling price is less. So here we get our loss. So loss कितने का है? 800 minus 500. We have to do here 800 minus 500. And it will be 300. So 300 rupees का हमें loss हुआ है. Now we have to find the percentage, loss percent we have to find out. So the formula of loss percent is loss upon CP multiplied 100. So the loss is 300. Now the cost price was 800 multiplied by 100. Now we get, when we simplify this, now the answer will be 75 upon 2. Let's divide it by 2. So it is 37 1 upon 2%. So here the loss percent for this question is 37 1 upon 2%. Similarly, you have to find out the loss or the profit percent for the rest of the questions. Now question number 2 is find the selling price. Selling price निकालना हमें यहाँ पे percentage दिया गया है. So let's find out the selling price. So here we get a profit of 10%. So the formula is profit percent is profit upon CP multiply 100. Profit is given 10%. Let's find the profit. CP is 235 multiply 100. So now let's cross multiply this. So it will be 2350 divided by 100.
So it will be 23.5 rupees. This is a profit. Now it's asking for selling price. Selling price पूछ रहा है. So as we know, the formula of selling price is cost price plus profit. So cost price is 235 rupees plus 23.5. So when we add these numbers, we get 235 plus 23.5. So the selling price is 258.5, means 258 rupees and 50 paise. I hope children this is clear. Similarly, you have to find the answer of the rest of the questions. Now question number 3 is find the cost price. So here again you have to do the same thing. You have to find the cost price. Selling price is given, gain percentage is given, and you have to find the cost price. So here the profit percentage is equal to profit upon cost price multiplied by 100. So percentage is 8, and so here children, we selling price is given and gain percentage is given. You have to find the cost price. So the cost price will be selling price. We have to first find out how much is the gain. We have to find the gain first. So 135 multiply 8%. So children, this is the total gain that we have got. Now selling price will be greater. The selling price ज़्यादा होगा तो ही we will get the gain. So we have to subtract this gain from this selling price. So cost price is equal to selling price minus gain. So here when we subtract these numbers, we get. So children, when we have subtracted these, on an average we get 124.2, which can be written as 125 rupees. So here the cost price is rupees 125. Similarly, you have to do the rest of the questions. Now the question number 4 is a table is bought for this much rupees and sold for the loss of this much percentage. Find the selling price of the table. एक टेबल है जिसका कॉस्ट प्राइस दिया गया है और इतने लॉस पे से जो है सेल किया गया. तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द लॉस एंड देन जो लॉस आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो वी विल गेट द we will subtract this cost price from that, and then we will get the selling price of the table. So similarly children, you have to do the rest of the questions that are given here. Read it carefully and complete it. And with this we have completed the chapter. I hope that you have understood it, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay weighted.